Good evening, Sankalp. How is my voice clarity? Is it like as usual or it's bit of low? How is it? Okay, it is low. Right. Okay, so now I think my voice should be better. Is it? Okay, good, fine. So there are a few things I want to discuss with you people. Mm, I just want to know syllabus status of your college. Okay, now although you have got the link for maths 2, but we will be continuing our maths 1. So what is the status in your school? Sorry, I'm talking about again school. It's not school, it's college now. So how many chapters have been completed in your college? Let me just show you the okay. I don't know whether I have asked you before or not, but I just don't remember. That's why I'm asking again. Okay, so let me just present you the index so that, okay, I had asked you already. Okay, good. So no problem. So see, we are lagging too much, I guess. Okay, yeah, they have cut some sections of some chapter, and I know that, and we'll be going according to that only. Okay, so although we have taken complete determinant and matrices chapter, I think there were few points they were cut from the syllabus, but we still took that. We are not going to do that. Okay, in further chapters. So I think maths 2 syllabus is too much lagging, so we have to go a little bit fast, and we have to take extra lectures as well. So first thing I want to tell you is, from next class, you please be prepared with be mentally prepared for a 1.5 hour class, or maybe 2 hours sometimes. Okay, so if we are not going with that speed, we will not be able to complete the syllabus. Okay, so because now I have occupied in other activities, so I won't be available on, let us say, Saturdays or Sundays. I'll be available mostly on Mondays and Tuesday only. Okay, so that's why we have to adjust the schedule of both you and me, and we have to cover up the syllabus, but we just don't have to rush through it. Okay, मतलब हमें सिर्फ complete करना है ऐसा नहीं. I will be giving you some tasks, and you will be completing the task. You will be solving few examples at your home. Okay, we will not be taking all the examples throughout examples. Okay, so please be cooperative, cooperate with me, so that I'll be able to cover up your syllabus. Okay, now yeah, so uh, we are going to learn few problems of practice set 9.3 from the chapter, right? Let me just present the screen from the chapter probability. I guess it is visible now. Yeah, so we have seen till 3 problems. Okay, and now I think fourth problem is again done, is it? Fourth problem bhi ho chuka hai. So we will be starting with the fifth problem itself. So in the last lecture, I have told you some the basics about it. So today again, I'm not going to tell the basics. I'm just starting the problem only. Okay, so see, A, B, and C try to hit a target simultaneously but independently. The respective probabilities of hitting the target are 3 by 4, 1 by 2, and 5 by 8. Find the probability that the target
is hit by exactly one of them, is not hit by any one of them. C, it is hit, and D, it is exactly hit by two of them. So although I'm not going to cover up all the basics, but one basic thing I would like to tell you is, whenever there is an and, we use intersection. Okay, whenever there is and, we use intersection, and whenever there is or, we use union. ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? and for intersection or for union. Now it is hit by exactly one of them, मतलब either by A or by B or by C. Is it? is A टारगेट हिट करेगा, या तो B टारगेट हिट करेगा, या फिर C टारगेट हिट करेगा, एंड एग्जैक्टली वन ऑफ एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम, मतलब उन तीनों में से किसी एक ने ही टारगेट नहीं हिट करना है. अगर A हिट करता है तो B और C ने हिट नहीं करना चाहिए, B हिट करता है तो C और A ने हिट नहीं करना चाहिए, लाइक दिस. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिटिंग द टारगेट इज 3/4. Correct. Probability of A hitting the target is 3/4. So probability of A not hitting the target is 1/4. Did you get this? Okay. Probability of A not hitting the target is 1/4. This, it will be complement. See, A is 3/4. अभी मैं यहाँ पे probability of A लिखने की जगह पे मैं सिर्फ A लिखूंगा. Okay. So मतलब हमारा थोड़ा सा टाइम भी सेव होगा. तो A की probability क्या है? A hitting the target is 3/4. A not hitting the target, that means A complement, that will be 1/4. A plus A complement should be 1. Is it? A plus A complement should be 1, the complete set. Now B, for B it is, B hitting the target it is 1/2. B not hitting the target it is 1/2 again. Barabar. B complement should be 1/2. C hitting the target is 5/8, and C not hitting the target is 3/8. I hope till this you have understood. Okay. ए बी सी की प्रोबेबिलिटीज मैंने लिख ली, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल लिया. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम. मतलब जब ए हिट करेगा तो बी और सी हिट नहीं करेंगे, बी हिट करेगा तो ए और सी हिट नहीं करेंगे, लाइक दिस. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए ने टारगेट हिट किया है, ए ने टारगेट हिट किया है, जबकि बी और सी ने टारगेट हिट नहीं किया है. ओके, सी मैंने कैसे लिखा? सिर्फ अभी ए ने टारगेट हिट किया है, बी और सी ने टारगेट हिट नहीं किया है. ओके, एंड हियर इट शुड बी इंटरसेक्शन, क्योंकि ये तीनों कंडीशन साथ में हो रही है, तीनों में से एक ट्रू नहीं है, तीनों भी ट्रू है. करेक्ट. ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों भी कंडीशन ट्रू रहेगी, तभी जाके ए टारगेट हिट करेगा और बी और सी टारगेट हिट नहीं करेंगे. नाउ दिस इज वन, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. या फिर और बी हिटिंग द टारगेट से, नाउ अभी यहां पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहां पे कौन हिट कर रहा है टारगेट? बी इज हिटिंग द टारगेट. या फिर और के लिए मैं फिर से यहां पे यूनियन लिखूंगा, एंड A is not hitting the target, again B is not hitting the target, only C is hitting the target. Okay, तो ये मैंने जो पहला हमारा स्टेटमेंट था, इज टारगेट इज एग्जैक्टली हिट बाय वन ऑफ देम, तो इसको मैंने इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया. अभी इसे लिखना कैसे है? जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, यानी कि एंड की बात करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन होता है. जब यूनियन रहेगा या फिर और रहेगा तब एडिशन होता है. बराबर. नाउ यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी रहेगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी रहेगी, दैट इज 1/2. अगेन सी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी रहेगी 3/8. ओके, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ले लिया, जहां पे भी इंटरसेक्शन का साइन है या फिर एंड है वहां पे मैंने मल्टीप्लीकेशन ले लिया, और फिर जहां पे यूनियन है मैं यहाँ पे प्लस का साइन लूंगा एडिशन का. सो फिर से ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1/4 multiplied by 1/2 multiplied by 3/8, like this. तो ये सब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ तो आंसर मिलेगा. सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो सी नाउ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 multiplied by 1 is 3, so 3 multiplied by 3 is 9,
4 to the 8, 8 8 the 64. So 9 by 64. Okay, I have to write it like this. Okay, so this will be 9 by 64. Please let me know if I'm wrong. Okay, 9/64. तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. a complement multiplied by b, that is 1/2 multiplied by 1/4, that is 1/8, and multiplied by c complement, that is 3/8. 1/8 multiplied by 3/8 is 3/64. 3/64. मैं यहाँ पे प्लस साइन लिख रहा हूँ. यहाँ पे यूनियन है ना, तो यूनियन की वजह से मैं यहाँ पे प्लस साइन लिखूंगा फिर से. और इन तीनों के बीच में मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है. Now a complement multiplied by b complement multiplied by c. So 1/2 multiplied by 1/4, that is 1/8. 1/8 again, multiplied by c, that is 5/8. Wait. Sorry. Okay, sorry. Okay, I was not audible. Okay, so see, a complement multiplied by b complement multiplied by c. So 1/8 multiplied by 5/8, that is 5/64, is it? Now 9 plus 3 plus 8, that is, sorry, 9 plus 3 plus 5, that is 17, I guess. So 17/64 will be the answer for the first one. 17/64 will be the answer for the first one. That is, this is the probability that the target is hit by exactly one of them. Okay, so if you understand, just put yes in the chat box. We'll quickly move to the second point. Okay, shall I rub this? Okay, good. Sankalp has got it. Okay, like everyone, good. So मैंने यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे ये भी ठीक है. Now is not hit by any one of them. Is not hit by any one of them. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए से भी टारगेट हिट नहीं हुआ है, और बी से भी हिट नहीं हुआ है, और सी से भी हिट नहीं हुआ है. तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. ओके, सी कॉम्प्लीमेंट अगेन, सी बार. तो क्या रहेगी? 1/4 multiplied by 1/2 multiplied by 3/8. So it should be what? 3/64, is it? 3/64 should be the probability that the target is hit by none of them. ठीक है, 3/64. नाउ इज हिट, अभी टारगेट हिट हुआ है, तो किसी ने भी हिट नहीं किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/64. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि टारगेट एटलीस्ट हिट हुआ है किसी एक से या फिर सभी से, तो इसे कैसे निकालेंगे हम? 1 - 3/64. ओके, मतलब 3/64 जो है प्रोबेबिलिटी टारगेट हिट ना होने की है, किसी ने भी उसे हिट नहीं किया है. तो अगर हम उस प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि टारगेट इज
hit by at least one of them, two of them, or all of them. So that will be the probability, that will be 61 by 64. Is that clear? 61 by 64. Okay. Now the last one is exactly hit by two of them. तो पहला जो हमारा था उसमें क्या था, is exactly hit by one of them. अभी इसमें two of them है, मतलब कि हमें कैसे लेना पड़ेगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B एंड C, मतलब B और C ने टारगेट हिट किया है, A ने टारगेट हिट नहीं किया है. दिस इज फर्स्ट केस. नाउ सेकंड केस विल बी, यहाँ पे मैं यूनियन लिखूंगा जो कि बाद में जाके प्लस हो जाएगा. यहाँ पे A ने और B ने टारगेट हिट किया है, C ने नहीं किया है. लाइक दिस, यूनियन टारगेट इज हिट बाय A एंड C बट नॉट बाय B. ओके, सो इसमें और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? बी और सी ने हिट किया, ए और बी ने हिट किया, ए और सी ने हिट किया. सो आई थिंक दीज थ्री कंडीशंस शुड बी देयर. ओके, तीनों में से किसी एक ने हिट किया है यहाँ पे. सॉरी, तीनों में से कोई भी दो स्टूडेंट ने या फिर दो पर्सन ने उसे हिट किया है. सो दैट शुड बी द प्रोबेबिलिटी. यू कैन कैलकुलेट दिस. ओके, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारा डाटा अवेलेबल है. Okay, so this is again similar problem like the previous one. ये दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी है एंड पूछा है कि प्रॉब्लम सॉल्व, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व और प्रॉब्लम इज सॉल्व. द प्रॉब्लम इज सॉल्व एग्जैक्टली वन ऑफ बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम. ओके, तो पीछे इन द लास्ट एग्जांपल वी हैव गिवन थ्री पर्संस बट हियर यू हैव टू ओनली, सो इट वुड बी इजियर देन द प्रीवियस वन. सो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस फॉर यू. ओके, you can calculate this. So A speaks truth in 80% of the cases and B speaks truth in the 60% of the cases. Find the probability that they contradict each other in narrating an incident. मतलब A अगर सच बोल रहा है तो B झूठ बोल रहा है और B अगर सच बोल रहा है तो A झूठ बोल रहा है. ओके, सो A की सच बोलने की probability क्या है? What is the probability of A speaking truth? What is the probability? 4 by 5. Is it 4 by 5 should be 80%, यानी क्या होता है 4 by 5, करेक्ट. On 4 instances out of 5 A speaks truth, whereas B speaks truth on 3 instances out of 5. बराबर. A is equals to 4 by 5, probability of B is equals to 3 by 5. मैंने यहाँ पे लिख दिया. Now A complement should be 1 by 5 and B complement should be, what should be B complement? What should be B complement, students? Sessions should be interactive. Okay, you should interact continuously in the chat box or if needed by turning on your mic. What should be the probability of B complement? A की probability दी है 4 by 5, तो A complement की probability होती है 1 by 5. B अगर दिया है 3 by 5, तो B complement की probability क्या रहेगी? Answers are getting delayed, so I consider that my voice is getting late delivered to you. Is it? That should be the case. Yeah. Suraj has given one answer, that is 2 by 5, which is correct. 2 by 5 should be the probability of B complement. बराबर. Complement कैसे निकालते हैं? Okay, so let us suppose in a box there are 5 things or fruits or balls, whatever. Okay, if we take 3 of them, अगर हम 5 में से the 3 things ले लेते हैं, तो how many are left there? 2 left there out of how many? 5. 5 में से 2 बचे हैं, तो like B complement इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. Okay, so the probability that we have to find out is when they narrate an incident, they are contradicting each other. मतलब अगर A सच बोल रहा है तो B झूठ बोल रहा है और B सच बोल रहा है तो A झूठ बोल रहा है. ओके, सो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये इंसिडेंस होना चाहिए. लाइक मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ. A सच बोल रहा है, उसी वक्त B क्या करेगा? झूठ बोलेगा. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग लाई
or this is the first instance, okay, or this is the first possibility, or second possibility is ए झूठ बोल रहा है और बी क्या कर रहा है, बी सच बोल रहा है, like this. Okay, so if you solve this you will get the probability that they contradict each other when narrating an instance. So a की probability क्या है, 4/5 multiplied by b complement, that is 2/5, plus a complement is 1/5 and b is 3/5. Okay, so 4 2s are 8 and 5 5s are 25. 8 divided by 25 plus 3 divided by 25, that should be 11 divided by 25, correct? 11 divided by 25, that should be the probability that when narrating an instance they contradict each other, a and b contradict each other. That's done. Okay, now 200 patients who had either eye surgery or throat surgery were asked whether they were satisfied or unsatisfied regarding the result of their surgery. The following table summarizes their response. Okay, so throat surgery की satisfied patients है 70, unsatisfied are 25 and total patients are 95 throat surgery के. Eye surgery के patients से total 105, out of them 90 are satisfied and unsatisfied are 15. So if person from 200 patients is selected at random, determine the probability that the person was that the person was satisfied given that the person had throat surgery. ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक एक व्हाट वी कैन से बेसिक थिंग हमें रिमेंबर करनी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें सैंपल स्पेस जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है या फिर कम करना पड़ता है. ओके, सो दैट इज द फंडामेंटल थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी क्या. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2000 पेशेंट्स में से 1% सिलेक्ट किया है. 2000 पेशेंट्स में से 1% सिलेक्ट किया है एंड नाउ वी आर looking for the probability that the person was satisfied given that the person had throat injury. तो हमें दिया है, एक कंडीशन दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन दी रहती है. तो कंडीशन इज व्हाट, द पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी. सो हमारा सैंपल स्पेस जो है वो डायरेक्टली 200 से 95 पे आ जाएगा. ओके, 200 से 95 पे आ जाएगा क्योंकि उस पर्सन को थ्रोट सर्जरी है ये हमें पता है, सॉरी थ्रोट सर्जरी हुई है उसकी ये हमें पता है. सो दैट्स व्हाई sample space will be 95. Now what probability we have to find out, we have to find out the probability that the person was satisfied. So satisfied persons कितने हैं थ्रोट सर्जरी के लिए, 70. So 70 divided by 95, if you reduce it then you will get some different figure. So that will be the probability that the person was satisfied given that the person had throat surgery. So पहले का आंसर क्या रहेगा, 70 out of 95. Sorry, wait. I'm extremely sorry, students, okay, for the interruption, but can't help with it. Can't help it. Okay, so 70 divided by 95 will be the probability of the first asked question. And now for the second one, see, that person was unsatisfied given that the person had eye surgery. तो eye surgery का patient है, तो sample space रहेगा 105, और the person is unsatisfied. Is it? He is unsatisfied. So what should be the probability? 15 out of 105. Okay, or 1/7. Okay, 1/7 should be the probability of this question.
C. The person had throat surgery given that the person was unsatisfied. तो अभी तीसरे का C का जो है थोड़ा सा आप लोग सोचो एंड बताओ मुझे कि तीसरे का क्या हो सकता है. What can be the probability of third one? C. So data is here. This is for satisfied patients. This is for unsatisfied patients. Okay. So tell me, the person had throat surgery given that the person was unsatisfied. What can be the probability? यहाँ पे भी आपको सेम करना है, कुछ आपको सैंपल स्पेस रिड्यूस करना पड़ेगा. दीज थिंग्स यू हैव टू डू. सो जस्ट ट्राई इट. 40 out of 95. Okay, that is answer from Sankalp. Okay. Okay, no, just cancel the answer. Yeah, fine. So what can be the correct answer, Sankalp? And everyone? 25 out of 95. Okay. Others don't want to try? Arya, Samir, Suraj? Don't you people feel that you should also try? C. We are talking about C. The person had throat surgery given that the person was unsatisfied. Sankalp, you just rethink about your answer again, okay? 25 out of 45, is it? Okay. So we have got two different answers. See, we have to reduce the sample space. तो यहाँ पे हमें sample space क्या रहेगी? Sample space will be of unsatisfied people or patients. So how many unsatisfied patients are there in total? There are 40 unsatisfied patients. Is it? 40 unsatisfied patients. Out of which throat surgery patients are 25 and eye surgery patients are 15. So our correct answer should be 25 out of 40. This is the probability that the person had throat surgery given that the person was unsatisfied. Okay, that should be the answer. Okay, हमें सैंपल स्पेस अभी क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा अनसेटिस्फाइड पेशेंट्स का. अनसेटिस्फाइड पेशेंट से 40 पेशेंट्स अनसेटिस्फाइड है, उसमें से 25 जो है वो थ्रोट सर्जरी के लिए अनसेटिस्फाइड है एंड रिमेनिंग 15 आर फॉर आई सर्जरी. Okay, so this should be the correct answer. I hope all of you agree with me. Shall we move ahead? Shall I rub this? Please give me quick responses, students. Please be interactive, okay? Please keep typing something in the chat box, so that's why I get going. If you don't respond in the chat box, that feels like a one-way communication and it doesn't interest me, okay? So keep responding. That motivates me. Okay. So the dice are thrown together. Let A be the event getting 6 on the first die and B be the event getting 2 on the second die. Are the events A and B independent? So this question is for you. Okay. पहली die हमने थ्रो की जिसपे की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 आने की एंड सेकेंड डाई पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी. So are these events A and B independent? When we say the events are independent, when the outcome of first event decides or changes the outcome of second event, or the outcome of second event is based on or the dependent on the first outcome of the first event. So then we say these two events are dependent, but in this case these two events are clearly independent. It does not matter what comes on first die, second die will have its own results. Okay, first die and second die will have their separate results independent of either results. मतलब दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. So that it should be independent event, right? Now 10th one, the probability that a man who is 45 years old will be alive till he becomes 70 is 5 by 12.
And okay, it is remain, something is here, right? Good. And the probability that his wife, who is 45 years old, will be alive till she becomes 65 is 3 by 8. What is the probability that 25 years hence the couple will be alive? Exactly one of them will be alive, none of them will be alive. So first of all, जो husband है, he is of 45 years, I guess 45 or something else is there, I forget things. Yeah, it's 45 years. And probability that he'll be alive till 70. Okay, 45 से लेके 70 तक जिंदा रहने की probability क्या है उसकी? 5/12. That is the probability. Now second one is his wife, that is she is 40 years old, and probability that she will be alive till 65 years of age will be 3 by 8. This is the probability that they will be alive. So I name it as A and B. Okay, तो A complement क्या रहेगा? A complement will be the person is not alive till the age of 70. The person is not alive. Okay, he is not alive. So what can be the probability? 7 out of 12. Okay, मतलब जिंदा ना रहने की probability यहाँ पे ज्यादा है. Good. So B complement will be again, what will be B complement? B complement will be wife. Her wife will not be alive till the age of 65. So that should be 5 out of 8. I hope you people are understanding whatever I'm writing here. Okay. Yeah, good. So what we have to find out? We have to find out the probability that the couple will be alive. First probability is what? The couple will be alive. तो कपल अलाइव होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी? दोनों के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी. ए इज अलाइव एज वेल एज बी इज अलाइव. ए एंड बी बोथ आर अलाइव. अभी यहाँ पे एंड वर्ड आया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन यानी कि मल्टीप्लीकेशन एंड इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन और यूनियन एंड समेशन. Remember these two things. You will not mess up with the probability chapter. Okay, so A multiplied by B करना है यहाँ पे 5/12 multiplied by 3/8, so that should result in I think 15 divided by 96 or something. Yeah, try it. Yeah, 96. 15 divided by 96. So that will be the probability. You can reduce that as well. मैंने यहाँ पे A multiplied by B किया. Both the couple will be alive. मतलब both of them are alive. A भी alive है और B भी alive है, तो मैं इन दो probabilities को A और B को सिर्फ multiply कर दूंगा. Okay, so that is how I will get the probability that the couple will be alive. Now second probability is exactly one of them will be alive. Now if A is alive, B is not alive. Okay, and B is alive, A is not alive. So in that case, what we have to do? A is alive but B is not. Or second case can be, you people start calculating it. आप कैलकुलेट करना शुरू कर दो. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो कैलकुलेट करना शुरू कर दो. A is alive but B is not, and B is alive, A is not. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपको मिल जाएगा 5/12 multiplied by 5/8, that is 25/96 will be there. फर्स्ट के लिए मुझे लगता है 25/96 will be the probability. एंड प्लस सेकेंड भी हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें. तो सेकेंड के लिए प्रोबेबिलिटी रहेगी 7 3 21 डिवाइड बाय 96. 46/96 should be the probability, I guess. That will be the 46. Yeah, 46 divided by 96. So if we divide it by 2, that is 23/48. 23/48 should be the probability that exactly one of them will be alive. See wordings. यहाँ पे word देखो क्या है. Exactly one of them, either A or B, not both. Not both. Okay, so 23/48 should be the probability. I guess you understood this as well. Shall we move further?
Shall we, students? Yeah. Okay, good. Now, the exactly one of them will be alive is done. None of them will be alive. मतलब उन दोनों में से कोई भी अलाइव नहीं है, नाइदर ए नॉर बी. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? We have to multiply the probabilities of a complement and b complement. So a complement is what? A complement or a bar is 7 by 12. Okay, and b complement is, what is b complement? 5 by 8. Should it be? Yeah, 5 by 8. So 7 5 is 35 by 96. 35 by 96 will be the probability that none of them will be alive. None of them will be alive. Good. At least one of them will be alive. At least one of them. मतलब उन दोनों में से एक जिंदा हो सकता है या फिर दोनों भी जिंदा हो सकते हैं. ओके, सो ए एंड बी both can be alive, or A is alive, B is not. B is alive, A is not. ओके, तो इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ए बी हमने निकाला था पहले एग्जांपल में, दैट इज 5/32. इट वाज समथिंग लाइक दैट. 5/32 चेक कर लेना एक बार. 5/32 प्लस ये प्रोबेबिलिटी तो हमने एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अलाइव में निकाली थी, दैट वाज आई थिंक 23/46. दैट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अलाइव. ओके, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव. गुड. So again, this question looks easy. Okay, you can try it at home. So again, this bag contains 3 yellow 5 brown balls. So these questions looks easy. Okay, तो इनको try करो घर पे. ठीक है, इनको घर पे try करो. अगर नहीं आता है तो मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर टू गिव यू रिस्पॉन्सेज. ओके, व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो. प्लीज कॉल मत करना क्योंकि मैं दिन में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ. ओके, आई एम फ्री ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ओनली. ऑन अदर डेज आई एम बिजी. ओके, so you can WhatsApp me. I'll be responding to your queries. Try करो ये सारे questions and please remember most of the portion or most of the questions you have to solve. Now for the next class we have Bayes theorem. So Bayes theorem क्या होता है ये हम देखेंगे next class में. And let me just see how much portion is remaining here. Exercise 9.4 and exercise 9.5. Okay, these two exercises are remaining, so I expect the 2 more lectures for this chapter. Okay, 2 lectures के ज़्यादा इसको लगना नहीं चाहिए. So it is only possible if you people respond in that way. ठीक है, तो प्लीज ट्राई करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस. कोई प्रॉब्लम आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. ओके, so yeah, it's 7:40 only, but I have one work to do, so that's why we have to leave early today. Okay, so yeah, be in touch if there persist any problem. Okay, I'll be there to solve it. So please try it, and yeah, bye bye, thank you. You guys are free to leave. Bye bye.